हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड फॉर प्लेसमेंट। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन ऑपरेटर के बारे में। ओके, इन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है और पहले हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हमें यूज़ क्यों करना है। ओके, सो लेट्स से एन एग्जांपल, लेट्स से वी वांट टू गेट अ कस्टमर व्हाट इज़ लोकेटेड इन वर्जिना और फ्लोरिडा और जॉर्ज। ओके, इन सारे लोकेशंस में दैट customers is located. So I can write a query like state VA or state GA or state FL, like or condition I can put, and I can write multiple ones. Okay, so multiple state I can putting the or condition, right? Or I can say that state VA or GA or FL, right? So this is a or condition, we can have it that equal Florida, right? So अगर ऐसे नहीं करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है क्योंकि आई एम यूजिंग और अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। ओके ओके, सो इट्स बेटर टू कीप लाइक बूलियन। सो यहाँ पे जो बार बार हमें और यूज़ करना पड़ रहा है, सो विच इज़ ट्रू और फॉल्स। बेसिकली दिस और जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स के ऊपर देता है। तो दैट विल बी क्वाइट द क्वेरी जो हमें मिलेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा और मल्टीपल एक्सप्रेशंस और मल्टीपल कंडीशंस हमें यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। सो बेटर टू यूज़ दिस और इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस using the or operator, we can use in operator. Okay, state in VA FA or GA like Virginia Flora or so basically ये सारे in condition के inside अगर हम इसे mention कर देंगे state in these things, so same query, you can see the output I can get it like in the same way. So this query is exactly equivalent to the or operator. So rather than using multiple or, I'm just using in. I can also use not in, right? So I can also use not in condition. So basically if we don't want those result or opposite to that, all right, so this is pretty easy. So let's see one exercise on this. So basically exercise now we have, I want to write a query to get the product from the quantity in stock which is equal to the value of 49, 38 and 72. ठीक है, so अभी इसको समझने के लिए what I have to do is I can use or I can use in condition which we have learned it just now. So for using in condition I can write it select star from to get the product where the quantity in stock, okay, quantity in stock in 49, 38, 72. Okay, so basically if I'm going to execute this I will be getting all the result which is stock in equal to these values. Okay, thank you so much guys and this is all about today इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डू सब्सक्राइब टू कोड फॉर प्लेसमेंट। थैंक यू।